अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल का मीठा या फिर फिरनी। ये हमें चाहिए रूह अफ़ज़ा। ये आप कितना चाहिए ऐड कर सकते हैं। पिंक कलर के लिए हाफ कप खवा, क्वार्टर कप मिल्क मेड, हाफ कप शुगर एंड हाफ कप ऑफ ज़ीरा राइस विच आई हैव सोक्ड इन वाटर। मिल्क 1 1/4 लीटर। राइस को सोक करके हाफ में बीट कर लीजिए, जस्ट पल्स इट। कीप अ पैन ऑन द स्टव। वंस द पैन इज हीटेड, add the milk, add the Zeera rice, mix well. You have to keep stirring it, otherwise it will get caught at the bottom. On slow flame. Now add half cup sugar. Keep stirring. Now add quarter cup condensed milk. Mix well. Keep stirring. After 5 minutes, add the khova. Cook till the khova mixes well and the rice is cooked. On low flame. Now add Rooh Afza. This depends on the color that you want the firni to be. You can have it lighter color or you can have it a little darker color. It's done. For garnishing, I have taken badam, pista, dry grapes and ghee. The ghee in a pan. Ghee is hot. Add the badam, pista and the dry grapes and saute for a minute or so till they change a little color. Now add them to the firni. Mix well. Check for sugar. Firni is ready to be served. You can garnish with dry fruits, pista or badam. Thank you for watching. Do try it out at home.